Okay. So we have been given a diode. Diode is ideal, and we are making it reverse bias by 12-volt battery. Okay. And also applying a sinusoidal function, okay, whose value is given by 24 sin omega t. सर स्क्रीन फ्रीज हो रही है. फ्रीज हो रही है, क्या हो रहा है अभी? ठीक है. सर मेरे साइड से तो फ्रीज हो रही है स्क्रीन. ओके. मेरा एनी इशू. एनी अदर स्टूडेंट? स्क्रीन ठीक है? नहीं सर, यहाँ से तो सही है. सही है. ओके, थैंक यू. So this is 12-volt battery. Okay, the diode is ideal and the resistance value is 100 ohm. Now the question is that find the fraction of each cycle. Find the fraction of each cycle during diode conducts. Okay, diode conducts. And the second question is find the peak value of diode current. Peak value of diode current. And the third question is, okay, maximum reverse bias voltage on diode. What is the maximum reverse bias? Reverse bias is on diode. On diode. Okay. So as you can see from the circuit, okay, beginning, your diode is reverse bias. So obviously it will not conduct, okay, for the full positive cycle. Only the fraction of cycle only the diode will conduct. Whenever the input voltage, okay, this V sin omega t, whenever this is greater than 12, only on that time period only this diode will be forward bias. Otherwise it is always reverse bias. Okay, you can see the negative of the battery is connected to the plus of the plus 12 volt. Okay, which makes it reverse bias. So until this voltage, this source is greater than 12, okay, this diode is in reverse bias. Once this is equal to or greater than 12, okay, the slowly diode will start conduct. Okay, so let us see what will happen if I draw the signal. So this is my signal. So this is peak value is 12 volt. Okay, sinusoidal function. And now what will happen? This diode is reverse bias for 12. Okay, so whenever this reached to 12, okay, whenever this sinusoidal function reached to 12, up to that time diode will not conduct. Okay, so say this time is omega t1. Okay, after that what will happen? Once the voltage become greater than 12, okay, so its maximum value is 24. This goes up to 24. Okay, so once this is up to about 12, okay, diode will be forward bias. Okay, and up to this time it will be forward bias, and again it will come reverse bias. So current will not conduct. Okay, so only this time period, omega t1 to omega t2, diode will conduct. Okay, now we want to calculate what is this time period. So this function will be, okay, so this function will become 12 at time omega t1. Okay, so the sine omega t1 will be your how much? 12 upon 14, 24 to 1 by 2, and this gives me omega t1 value what? Pi by 6. Half is 1, pi by 6. So omega t1 is pi by 6. Okay, and
this full cycle is 180. So diode is conducting only for this period. So this is pi by 6. This is 180. So omega T2 will be obviously what? कितना होगा omega T2? कितना होगा बताओ? ओमेगा T2 की वैल्यू कितनी होगी? Anyone? भी ये आपका कितना है? ये सिमेट्रिक है ना? जो गैप ये है वही गैप ये है. अगर ये पाई बाई 6 है तो ये पाई बाई 6 सर, पाई बाई 6 है तो ये क्या, ये 180 है तो क्या हो जाएगा? 180 माइनस पाई बाई 6 कितना आएगा? 150. ओके, पाई बाई 6 इज 30 डिग्री. सो 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री कितना हो रहा है? 150 डिग्री. सो आपका जो डायोड कंडक्ट कर रहा है दैट इज कंडक्टिंग बिटवीन 150 डिग्री टू 30 डिग्री. ओके, सो डायोड कंडक्ट्स. ओके, सो डायोड conducts for a 150 degree to minus 30 degree. That is only for 120 degree diode is conducting. So obviously in reverse bias, when this is reverse bias, okay, this battery is already making its reverse bias. Further, if you add negative cycle, that will also make diode reverse biasing. Okay, so negative cycle diode is reverse bias, so diode is not conducting, and positive cycle also only some time period it is conducting. Okay, so the question was asked, what is the fraction of cycle it will conduct? Okay, the full cycle is 360 degree. Then the fraction will be fraction of conduction, fraction of cycle will be 120 degree divided by 360 degree. Okay, that is how much? 1/3. So 1/3 portion of cycle it will conduct. Okay, now second is बोलिए. सर जरा प्लीज ग्राफ बताएंगे, मेरा इंटरनेट चला गया था पूरा. सिर्फ एक बार भी रिपीट की ग्राफ क्या है? ये ग्राफ ये बोल रहा है कि जब वोल्टेज आपका 12 से ज्यादा हो जाएगा, इनपुट आपका 12 से ज्यादा हो जाएगा, ओके, उस टाइम पे डायोड कंडक्ट करना शुरू कर देगा. ओके, तो मैंने वो टाइम पीरियड डाल के इसमें ओके निकाल लिया कि ओमेगा T1 कितना है. दैट विल बी 12/24 पाई बाय 6. तो इस पीरियड तक वो डायोड कंडक्ट नहीं करेगा आपका. फिर यहाँ से लेके यहाँ तक डायोड कंडक्ट करेगा. ये अगर पाई बाई 6 है, ये 180 है, ये भी सिमेट्रिक है, पाई बाई 6 है, तो ये हो गया 150. तो 150 डिग्री से आपके 30 डिग्री के बीच में डायोड कंडक्ट करेगा. ओके, दैट इज टोटल इज 120 डिग्री एंगल. तो साइकिल जो हो जाएगी वो आपकी 1/3 साइकिल हो जाएगी वो टोटल की. ओके, और पीक वैल्यू करंट कितना का बताओ? पीक वैल्यू कितना होगा करंट का? सो पीक वैल्यू विल बी व्हेन द वोल्टेज आल्सो पीक. ओके, तो क्या कितना हो जाएगा बताओ? पीक वैल्यू कितनी हो जाएगी? व्हेन दिस इज 24 and this is 12, okay, upon 100 ohm. So this will be 12 upon 100. This will be 0.12 ampere will be the peak current of diode. Okay, and the last is what will the maximum value of reverse bias on diode? Okay, so reverse bias diode will be open. Okay, and this will be plus, this will be minus. Okay, so this will be plus, this will be minus. Okay, if I want to calculate the VD, let us calculate VD. Okay, so VD will be what? Apply now. This is minus 24. This is minus 24. This is minus 12, and this is your VD equals to 0. So VD has reverse bias of 36 volt. Okay, maximum value is 24, 12, and the VD is 36 volt. Okay. So this was the question. Okay, so this was our ideal model. Ideal model हमारा complete हो गया है. Now let us move to the next model, which is called constant voltage model. So constant voltage model. सर लास्ट में वीडी कितना आया था? 36.
तो कांस्टेंट वोल्टेज मॉडल, तो इसमें क्या अज्यूम करेंगे, वी विल अज्यूम दैट इन फॉरवर्ड बायस, ओके, there is a fixed voltage drop across the diode. So in the ideal diode model हम क्या assume कर रहे थे कि diode has a zero voltage drop. Okay, now here we assume there is a fixed voltage drop across the diode. Okay, and that value is your 0.7 for silicon. Okay, so if your silicon, that is 0.5. If it is germanium diode, that will be 0.3. So say this is silicon, so for silicon this will be 0.7. Okay, in forward bias, and in reverse bias the same thing, you will assume the zero current. Okay, so what does mean? So if I have a diode, okay, so this diode will be replaced. If this diode is forward bias, it will be replaced by fixed voltage. Okay, so either 0.7, okay, for silicon, or you can also replace this by a 0.3 volt for germanium. Okay, and when VD is greater than 0.7 across the diode, you can safely replace it by battery. Okay, if VD is less than 0.7, okay, then diode will be open. Diode will be open. Diode will be reverse bias, so diode will be open. And of course, when there is a reverse bias and VD is less than 0, when there is reverse bias, you can always do same thing, you can make it open. समझ आ गया ना? जब भी वोल्टेज डायोड के अक्रॉस वोल्टेज, अब डायोड को वोल्टेज चाहिए कनेक्ट करने के लिए, अगर वो वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो वो रिवर्स बायस में है, फॉरवर्ड बायस में भी। तो फॉरवर्ड बायस में मिनिमम वोल्टेज चाहिए 0.7, अगर वोल्टेज 0.7 से ज्यादा है तो डायोड कनेक्ट कर जाएगा एंड यू कैन रिप्लेस विद बाय स्मॉल बैटरी ऑफ 0.7। और रिवर्स बायस में तो इट इज ऑब्वियस, इट विल बी जीरो करंट विल बी फ्लोइंग एंड यू कैन शुड रिप्लेस डायोड बाय ए ओपन सर्किट। ओके, तो इसके क्वेश्चंस करते हैं। सर मतलब लेस देन है तो वो ओपन हो जाएगा, हाँ, मतलब अगर करंट में अगर वोल्टेज नहीं मिल रहा फॉरवर्ड बायस में भी, अगर वो इतना वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो वो ओपन ही है, तो ओपन ही है। So, okay, so I'm giving a simple problem. Say this is 1 kilo ohm. You have a diode here. Okay, so I'm applying 5 volt, 1 kilo ohm, and this is silicon. Okay, so it says find ID, VD, okay, and VR. निकालो कितना आएगा बताओ। ID कितना आएगा सर्किट में? तो पहले तो देखो कि ये फॉरवर्ड बायस है कि नहीं, फॉरवर्ड है या नहीं है। सो फॉरवर्ड बायस है क्या बताओ? फॉरवर्ड बायस है। और कितना वोल्टेज लग रहा है इसके ऊपर? कितना वोल्टेज आ रहा है? 0.7 से ज्यादा है कि नहीं है बताओ? परमप्रीत बताओ कितना आ रहा है? तो 5 वोल्ट ही आएगा। 5 वोल्ट ही Open. आएगा, तो इसका मतलब 0.7 से ज्यादा ही है ना? Yes. So that means you can replace it by battery. Okay, so now for forward bias you can, this is DC voltage, this is forward bias, so you can write now this diode is equal to a battery, that is you can replace it by 0.7 volt. Okay, and this is your plus minus 5. Okay, now you can write the current is flowing ID, so you can write ID क्या हो जाएगा बोलो? -5 plus ID into RD is 1 kilo ohm. Okay, and then plus 0.7 volt equals to 0. So आपका कितना आ जाएगा अभी? ID will be 5 minus 0.7,
4.3 milliampere. Yes, 4.3 milliampere. 4.3 milliampere ID. Okay. और VD कितना है? What is the voltage drop across diode? VD कितना है? That is 0. VD कितना है? सर ये नहीं आएगा VD तो. यही तो आएगा, 0.7 तो आएगा. Yes sir. वोल्टेज ड्रॉप तो फिक्स हो गया. और VR कितना आ जाएगा? VR 0.7 ये आ गया. 5 - 0.7. तो 4.3 volt. 5 minus 0.7, 5 minus 0.7 आपका रेजिस्टेंस पे आ जाएगा 4.3 वोल्ट. ओके. लेट अस डू वन मोर प्रॉब्लम. तो हमेशा देखना है पहले. अब देखो, प्रीवियस केस में क्या था कि आपको डायोड आइडियल था, तो आपको पता चल जाता देखते ही. अगर आप ओपन सर्किट वोल्टेज नहीं भी निकालो तो भी आपको पता चल जाएगा कि डायोड कनेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है. ओके. यहाँ पे पता नहीं चलता है, यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा ओपन सर्किट वोल्टेज करके कि whether डायोड इज कंडक्टिंग और नॉट कंडक्टिंग. ओके. वहां पे तो साइन देख के पता चल जाता है. कुछ भी वोल्टेज है पॉजिटिव, कुछ भी पॉजिटिव प्रेशर है, तो हम कह सकते हैं डायोड कंडक्ट कर रहा है. पर यहाँ पे आपको एक्यूरेट निकालना पड़ेगा कि कितना वोल्टेज है अक्रॉस डायोड के. तो ये फर्क है पहले केस में और इस केस के अंदर. नाउ you have 12 volt. You have been given two diode. One is silicon, other is germanium. Okay. And you have been given 5.6 kilo ohm. Okay. And the battery is 12 volt. Okay. So again, we're saying find ID and find V naught. Okay. What is ID? Find ID and V naught. आईडी मतलब दोनों डायोड का निकालना पड़ेगा ना सेपरेट. हाँ. भी अब now see, if you want to replace it by forward bias, okay, this should be replaced by 0.7 and 0.3. Okay. Now if you make both the diode open, you have to check whether 1 volt is coming or not coming. So obviously 1 volt is coming, is 12 volt battery. If you apply this one, open this one, so no current will be flowing. So all this voltage will come across this one. So this is forward bias. Okay. So once this is forward bias, you can replace it by 0.7. This will be replaced by 0.7 and this germanium will be replaced by 0.3. This is 0.7. Okay. Now you can find the ID and V naught. So V naught is simple. Okay. V naught will be your 12 minus 0.7 minus 0.3, that is 11 volt. And ID कितना आएगा बताओ? ID will be 11 upon 5.6 kilo ohm. कितना आएगा? This will come your 1.96 milliampere. Okay. सर ये हाँ. आईडी टोटल करंट होगा ना दोनों डायोड्स के थ्रू पास होते हैं. टोटल करंट क्या होता है? डायोड सर्किट में जो भी ब्रांच में करंट बह रहा है वो 5 या 2 डायोड हो या 4 डायोड हो, उससे क्या मतलब है? करंट है अपने सर्किट के अंदर, इस ब्रांच के अंदर प्रॉपर, इस पूरी ब्रांच के अंदर करंट जो है वो आईडी है. ओके. केवीएल लगा दो तुम. -12. ओके. -12 प्लस दिस वन आईडी आरडी करके कम दिस वन 1.6. Okay. Let us do some more problem. Now ये लोग क्वेश्चन तुम लोग करोगे. So I am giving you diode. Okay. And parallel to which resistance
2 kilo ohm. Okay, and here I'm applying a battery 2 volt, and there is a resistance of 6 kilo ohm. Okay, now diode, for the first case, if diode, the first case is diode is silicon. Second case, your diode is germanium. And third case, your diode is ideal. Okay, diode is ideal. So you need to calculate current I. Okay, find the current I for all these three cases. निकालो. कैसे करोगे बताओ अभी. How to approach this problem? Now first आपका सिलिकॉन है. Okay, सर ओपन 0.5 आई तो सिलिकॉन तो करेगा ही नहीं ना. हाँ बस वेरी गुड. ऐसे चेक करना है. Always first you to check what is the open circuit voltage. Make it open. Okay, now check how much voltage coming across this one. So if you see here 2 and 6, 8 kilo ohm. So current is flowing here. I is flowing here. How much? Okay, 8 and 2 upon 8 kilo ohm. ये है ना 2 and voltage across this 2 kilo ohm will be voltage across this 2 kilo ohm will be 2 upon total is 8 kilo ohm into 2 kilo ohm. So that will be 4 by 8, 1 by 2, 0.5. So here voltage coming only 0.5 volts. Once 0.5 is coming, that means silicon will not conduct. So for silicon, this current will not go here. So all the current, so if current coming I here, so all the current will pass here. Okay. So for first case, okay. So first case silicon. Okay. First case silicon. First case is silicon. Okay. So for silicon case, my I will be what? I will be how much? 2 upon 8 kilo ohm. Okay, that is 0.1 by 4. So 1 by 4.25 milliampere. First case ID बोलो या I बोलो. इस क्वेश्चन में I बोला है. So my I will be 0.25 milliampere. Yes or no? कितना आएगा? Okay. And second case बताओ कितना आएगा? Second case क्या होगा? Sian, what are you getting? Same answer? Yes, sir. Same answer. Now second case, it will be germanium. Okay. Second case, when you put germanium, so germanium needs 0.3 volts. So now you can replace this by a 0.3 volt. Okay. That means now the voltage across this resistance is 0.3 volt. Okay. Now you want to find the current for second case. So second case, what will the current? You have a second case, germanium. Okay, for germanium, this is the circuit. So you can write the KVL -2. Okay, then plus 0.3 volt. You don't require current here. Okay, because you already have voltage, and then you have this I into 6 kilo ohm equals to 0. So your I into your I will be 2 minus 0.3 divided by 6 kilo ohm, that is 1.7 divided by 6 into 10 raised to power 3. Okay, कितना आएगा बताओ?
0.33 milliamp. 0.28 milliampere. 0.28 milliampere. Okay. 0.08 na 0.028 milliampere. Yes, sir. This is the answer. Okay. And the last case is simple. Last case it is ideal. So once you make it ideal, ideal में क्या करते हैं? शॉर्ट कर देंगे सर. शॉर्ट कर देंगे. तो आइडियल में शॉर्ट कर दो. ओके, आइडियल में शॉर्ट कर दो इसको. तो आपका आई क्या हो जाएगा? आपकी करंट यहाँ से जाएगा ही नहीं, पूरा करंट यहाँ से जाएगा. योर आईडी 1/3 आ जाएगा. वेरी गुड. 2 वोल्ट डिवाइड बाय 6 किलो ओम, दैट विल बी 1/3 मिली एम्पियर, दैट इज 0.33 मिली एम्पियर. ये आपका हो गया. ठीक है. नाउ एक क्वेश्चन और कर लेते हैं. So net 2017. Okay. So you were getting, this is plus minus. This is your 10 volt. Okay. And this is your 1 kilo ohm. Okay. And this is your diode. This is your diode. Okay. So question is asked, what is, suppose this is I. Okay. I1. This current is I1. Okay. So we are asking find I plus ID1. Current flowing here is ID1 and current flowing here is ID2. So saying calculate I plus ID1. निकालो कितना आएगा? ये आइडियल है. ये सिलिकॉन. These are silicon सर diodes. प्लीज रिपीट क्या? ये क्वेश्चन में 2 डायोड दे रखे हैं, पैरेलल है, सिलिकॉन में है. ओके. और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपको करंट निकालना है. ये करंट I1 है, ये ID1 है, ID2 है. सो बोल रहा है फाइंड I1 प्लस ID1 करंट. ओके. तो सिलिकॉन है तो क्या किससे रिप्लेस करेंगे? बैटरी से. बैटरी से रिप्लेस कर दो उसको. सो लेट अस रिप्लेस दिस बाय बैटरी. 10 वोल्ट तो दे रहे हैं हम लोग, इसको तो 0.7 ही चाहिए. ये भी 0.7 हो गया, ये भी 0.7 हो गया. ओके. अब मुझे बताओ ID1 और I में क्या रिलेशन है? ID1 और I2 में क्या रिलेशन है बताओ देख के. Actually, the current gets divided into equal half. Equal. So Very good. ID1 equal to ID2 equal to I/2. Very good. Okay, because both are same, both diodes are same, so both branches are same for this point. Okay, so the current will divide equally. So you can write your ID1 is equals to ID2 equals to I1 by 2. Okay. Now you need to find I1 plus ID1. Okay. So let us find first now what is your I1. So minus 10 volt plus I1 into 1 kilo ohm. Okay. Plus this is 0. I am applying KVL in this loop. Okay. Then you have a 0.7 volt equals to 0. So your I1 will be what? 10 minus 0.7. Okay. Divided by 10 raised to power 3, 1 kilo ohm. 9.3 milliampere. Okay. So 9.3 milliampere you're getting. Okay. And half of this will be ID1. Okay. So ID1 will be 9.3 milliampere divided by 2. कितना आएगा? 4.65 milliampere. Okay. And if you add, क्वेश्चन में पूछा है I1 plus
ID1, I1 plus ID1, I1 plus ID1. Okay. 13.95 milliampere. That will be 13.95 million. Sum of these two currents. तो डायोड में अगर आपको डायोड आता है तो क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल. ओके, just you need to find what is the open circuit voltage, what is the state of the diode. Okay, once you know the state of diode, rest things very easy. Okay. Now I'm giving you one more question. This plus, minus, okay. This is 10 volt, okay. And this is your 1 ohm resistance. Okay. And here you have a voltage drop across diode, and ID current is flowing in the circuit. So they say the ID is equals to VD square plus 2VD. Okay, for VD is greater than 0 and this is 0 for VD equals to 0. Okay, so this VD value is ID value is given to you. Okay, so it says find the value of VD. What is the value of VD? निकालो कितना आएगा VD. फाइंड ना. आपकी वोल्टेज ना तो आइडियल है ना ही ये कांस्टेंट ड्रॉप वोल्टेज है. नाउ द वोल्टेज ड्रॉप इज VD इन द सर्किट. ओके, यू नीड टू फाइंड द VD. फाइंड VD निकालो कितना आएगा. Some this is 2. 2 आएगा. ओके, क्योंकि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी. एंड व्हेन यू आर अज्यूमिंग VD इज ग्रेटर देन 0, सो आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है. So if you write the equation, this becomes Yes, sir, 2 volt is coming. 2 volt and minus 5. So 2 you have to take only 2 volt, minus 5 को छोड़ देना है. So this will be minus 10, okay, plus ID. So if it is positive, okay, ID is 1 ohm. So ID this one and plus VD equals to 0. Now this is forward bias. VD is greater than 0. So you can replace ID by this equation. That will be VD square plus 2VD plus VD equals to 0. And when you solve this one, this will give you VD square plus 3VD minus 10 equals to 0. And if you solve this one, this will give you VD equals to 2 volt and minus 5 volt. This is you cannot accept because you already say VD is greater than 0. Okay, so the VD will be 2 volts. VD square plus 3VD minus 10. Okay. Now the last model is your piecewise linear model. Okay. So the last is piecewise linear model.
सो पीस वाइज लीनियर मॉडल क्या आ जाएगा? That same like here. Okay, so this will be your I. Okay, and this is your voltage. Okay, so this is 0. So this is your V gamma cutoff voltage. Okay, now what does this mean? And reverse bias में ये आपका पहले जैसा ही है 0. Okay, so if your diode, okay, and it is forward bias, then this model says replace diode by a battery. Okay, if it is silicon, then 0.7. If it is germanium, then it is 0.3, and then keep one resistance also. Okay, now the diode has resistance. पहले क्या था? It was like this. Okay, zero voltage drop. Now second case, voltage drop was fixed V. Okay, but there was no resistance. So current is suddenly increasing point. Okay, now what happened? It has some resistance. So current is increasing like this. So the resistance is RF. This is a forward resistance. Okay. So if it is VD, okay. So if VD is greater than cutoff voltage, then this is the case. Okay. If VD is less than V gamma, then diode is open. Ever in the forward bias. This is a forward bias. Diode is open. Okay. And for the case of reverse bias, if VD is less than 0, you can replace diode, okay, plus minus by same like a open circuit. So let me do one or two problem on this also, so that will be clear to you. So you have been given a 5-volt battery, and then you have been given a 1 kilo ohm resistance, and then you have been given a diode. Okay. This is cutoff voltage is 0.65 volt, okay, for diode, and the forward resistance is 20 ohm. This is find the ID in the circuit. निकालो ID. पहले चेक करो फॉरवर्ड बायस है कि नहीं है. अगर फॉरवर्ड बायस है तो करंट निकालो. So ऐसे forward bias, हाँ फॉरवर्ड बायस है ना, वैसे पूरा तो front forward bias. तो करंट निकालो. सर ये कौन सा है? सिलिकॉन जर्मेनियम? ये लिखा होता कट ऑफ वोल्टेज 0.65 दे रखा है ना. अगर नहीं बोलागा तो दे देगा क्वेश्चन में. तो क्या करोगे इस बार? यू हैव फॉरवर्ड बायस 5 वोल्ट. दिस इज योर 1 किलो ओम, एंड डायोड क्या हो जाएगा आपका 0.665, एंड RF इसके साथ में जुड़ जाएगा 20 ओम. ओके, एंड दिस इज योर करंट. अब निकालना है ID. सिंपल ही है. ID कितना आएगा आपका?
ID will be 5 minus 0.65 and total resistance 20 ohm and 1 kilo ohm, 1020 ohm. Okay, कितना आ रहा है बताओ? So this will be 4.996. 4.26, 99. 4.35, 1020, and the answer I have 4.26 milliampere. किसी का क्या है? 96 आ रहा है क्या? कितना आ रहा है? 996. 4.26 4.26 था, 96 कहाँ से आएगा? 4.26 milliampere. 4.26 milliampere. So now the last question for today's class. So you have been given a diode, okay, and this is a 2 mega ohm resistance, 5 volt battery. The battery is 5 volts. Okay, and here you are taking output. Okay, and here you are applying a pulse. A pulse is called, okay, 50 volts minus 50 volts. Okay, this time period T. Now it says आपका डायोड है, उसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस RF is 0. RF is 0. Okay, and R reverse is 3 mega ohm. Okay, तो बोल रहा है कि बताओ कि आउटपुट क्या आएगा. तो इनपुट है आपका ये वेव. ओके, इनपुट इज गिवन लाइक दिस, स्क्वायर वेव. ऑफ 50 वोल्ट माइनस 50 वोल्ट. ओके, अब पूछ रहा है कि बताओ आउटपुट कैसा आएगा ये लगाने से. आपकी क्या बोल दिया है कि इसको बैटरी से रिप्लेस नहीं करना है. ओके, अगर फॉरवर्ड बायस है तो इसका रेजिस्टेंस 0 है, और अगर रिवर्स बायस है तो 3 मेगा ओम है. अभी कोई मॉडल यूज नहीं करना है, ये रेजिस्टेंस यूज करने हैं फॉरवर्ड एंड रिवर्स में. ओके, तो फर्स्ट केस में ये रिवर्स बायस में है कि फॉरवर्ड बायस में है? व्हेन दिस पॉजिटिव साइकिल कमिंग, तब ये क्या है? फॉरवर्ड का है, रिवर्स है. रिवर्स रिवर्स बायस, तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 3 मेगा ओम. तो 3 मेगा ओम लगा दो यहाँ पर. ओके, अब ये निकालो वोल्टेज कितना आ रहा है यहाँ पर. सो 50 वोल्ट आ रहा है स्टार्टिंग में. ओके, तो कितना है? -50 प्लस 3 मेगा ओम प्लस 2 मेगा ओम 5 मेगा ओम. ओके, प्लस 5 वोल्ट इक्वल्स टू 0. ओके, तो आई भी आएगा. आई सपोज आई फ्लो कर रहा है सर्किट के अंदर, प्लस 5 वोल्ट इक्वल्स टू 0. तो आई कितना आ जाएगा बताओ? 50 माइनस 5 अपॉन 5 to 10⁻⁶, 45, 9 माइक्रो एम्पियर. I is 9 micro ampere. Okay, and when 9 micro ampere current flows here यहाँ पे कितना ड्रॉप होगा? 9 into 3 कितना आएगा बताओ? 27. अब 9 ampere current is coming here, here will be 27 volts. तो रिमेनिंग 23 volts कहाँ पे आएगा? यहाँ पर आएगा. अगर आप 50 दे रहे हो, 27 यहाँ पे आ गया, एंड 9 into 2, ओके, 18 यहाँ पे आ गया. 9 into 2 18 मेगा ओम माइक्रो एम्पियर कैंसिल हो गया. 2 into 9 तो 18 वोल्ट्स ये, 5 वोल्ट्स ये, टोटल कितना? 23 वोल्ट्स हो गया. तो ऐसे समझ लो, या फिर ऐसे समझ लो कि
कि आउट ऑफ 50 27 यहाँ चला गया, बाकी 23 यहाँ आ गया। तो पॉजिटिव साइकिल में जब यहाँ पर 50 आ रहा है, यहाँ पे कितना आएगा? 23 ओनली। ओके, एंड नेगेटिव साइकिल में क्या होगा बताओ? नेगेटिव साइकिल में आपका डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। नेगेटिव साइकिल में when this is your minus, this is your plus, and diode is like this. Okay, so minus is minus, plus with plus. Okay, so this is forward bias, so you can replace it by zero resistance, that is short circuit. RF is given 0. Now in this case, whatever voltage you are applying, plus minus here, the same voltage come here. Okay, so now this is, you are measuring like this, voltage you are applying like this, plus minus. Okay, voltage, so this voltage will come here, whole voltage will come here. Okay, so that means now you can write V naught equals to how much? कितना आएगा बताओ? सेकंड केस में माइनस 50 पूरा का पूरा, पूरा का पूरा यहाँ आ जाएगा। ये पोर्शन, ये आपका माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा। -50 यहाँ आ रहा है, हमको वी नॉट है। ओके, तो वी नॉट इक्वल्स टू -50, -50 यहाँ आ गया पूरा का पूरा, -50. This is your output. Okay, so I'm stopping here, or can we do one more problem? How much time is remaining? Okay, so I'm just giving you your homework. You send me, you solve this problem and send me the solution. Now you will learn the circuit analysis also, and now you learn the diode also. Okay, so the way you want, you can use and tell me the answer. The homework is, you have been given is 600 ohm resistance. Across this you have a 300 ohm resistance, and then you have a 9-volt battery, and here you have a diode. Okay, and this is your 100 ohm. V gamma cutoff voltage is given 0.7 volt. RF is 20 ohm. Okay, so इस question में you need to replace diode by which is forward bias. You have to replace by 0.7 volt and forward resistance 20 ohm. Okay, now for this question I told you, you have to first find whether diode is a open circuit. Okay, so open circuit में if it's forward bias, you can directly replace by this one, and the rest you can solve. You learn many techniques. Any of the techniques you can use, like you can use the Thevenin's theorem. You can open this diode here, and you can for the rest of the circuit you can find the equivalent circuit. And then again, once you know the VThevenin, RThevenin, you can again put back this diode here with this voltage and resistance, and you can solve. Or any other method you like. So we open 3 volt है? Open 3 volt है. Okay, you have to send me the how much current is flowing through this diode ID. Okay, this is your homework. निकालो अभी फटाफट, निकाल सकते हो तो बताओ कितना आएगा. ना अभी कुछ समझ में नहीं आया तो बोलो. Any question? So if there's no question, then I'm stopping here. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.